everyone. Today we will discuss most important thinker of sociology, and the name of the thinker is Max Weber. ये सबसे important है sociology में because his contribution in the field of sociology, like social action, ideal types, authority and bureaucracy, and then Protestant ethics and spirit of capitalism, they are generally asked each and every year during exams. तो हर साल इनके जो concepts हैं, जो इन्होंने sociology में अपना कंट्रीब्यूशन किया है, वो यूपीएससी पूछता है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दिस थिंकर मैक्स वेबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव. नाउ हिज फील्ड इन द हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी इज फर्स्ट सोशल एक्शन, and then ideal types, then authority and bureaucracy, and then Protestant ethics and spirit of capitalism. In this lecture we will discuss only social actions. कि what are the types of what do you mean by social actions, what should be the characteristics features of social action, and then what should be the types of social actions, and then what should be the criticism of social actions. These are very important. So and in the next lecture we will discuss ideal types, authority and bureaucracy, Protestant ethics and spirit of capitalism. So let's start with social action. So before going to study any topic, it is very important to know the structural format for that topic, means what we had to study in that topic. Social action. Social action. Structural format में हम क्या पढ़ेंगे? Intro, फिर body part, characteristics, features, types, and then last conclusion. In this we will discuss criticism. Okay, so इनका 4 कंट्रीब्यूशन है सोशियोलॉजी में, एंड इन दिस लेक्चर वी विल कवरिंग ओनली सोशल एक्शन. In this we will focus on introduction part, then body part. In body part we need to focus on characteristics, features of social actions, and then what are the types of social action, and then at last conclusion. In this we will discuss what should be the criticism, and then statements concluding the social actions. So the first one is social action, introduction. तो मैंने हर एक लेक्चर में यही बोलता हूं कि इफ यू वांट टू राइट अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन, देन इन इंट्रोडक्शन इटसेल्फ जस्ट डिफाइन द टर्म. दैट शुड बी द बेस्ट इंट्रो फॉर एनी टॉपिक. अगर सोशल एक्शन पूछा है तो आपको सोशल एक्शन के बारे में लिखना पड़ेगा कि व्हाट शुड बी द डेफिनेशन ऑफ सोशल एक्शन. बट एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी डिफिनीशन आप अपने तरीके से नहीं लिख सकते हैं. जैसे रिलीजन हुआ, इफ देयर विल बी अ क्वेश्चन ऑन रिलीजन, कैसा भी क्वेश्चन हो, तो ऐसा नहीं कि रिलीजन क्या है, भाईचारा बढ़ाता है, प्यार बढ़ाता है, रिलीजन हर एक जगह होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है. वी कांट राइट ऑल दिस थिंग इन आवर पेपर. लिख सकते हैं लेकिन नंबर नहीं मिलेगा. ओके, सो वी नीड टू राइट अ ऑथेंटिक थिंग. वी नीड टू डिफाइन द टर्म इन अ ऑथेंटिक मैनर कि किस थिंकर ने कैसे डिफाइन किया, सो दैट आवर मार्क्स गेट बूस्टेड. So social action, what should be the intro? In introduction we will define what do you mean by social action. So social action is defined as the behavior by which human beings respond to an external stimulus after knowing it, after interpreting it, after generalizing it. A response to external stimulus. So it's a behavior by which a human being respond to an external stimulus by knowing it, understanding it and interpreting it. Knowing it, understanding it and interpreting it. For example, इसका मतलब ये हुआ कि सोशल एक्शन वो एक्शन होता है जिसके, कोई भी एक्शन सोशल एक्शन कहलाता है जो हम कोई रिस्पॉन्स देते हैं, कोई किसी को भी अपना रिस्पॉन्स देते हैं, वो सोशल एक्शन होता है जब उसको हम समझते हैं व्हाट शुड बी द मीनिंगफुलनेस ऑफ दैट थिंग. अब इसे एक
एग्जाम्पल से समझते हैं तब आपको समझ में आएगा कि व्हाट शुड बी द सोशल एक्शन। द फर्स्ट थिंग कि इंसेक्ट्स जो होते हैं, तो जनरली देखा जाता है बिफोर द एडवेंट ऑफ दिवाली फेस्टिवल से पहले बहुत सारे इंसेक्ट्स आने लगते हैं, लाइट वगैरह चलती है तो इंसेक्ट्स आने लगते हैं उस पर। तो ऐसा कहा जाता है कि व्हेन दिवाली केम तो सारे इंसेक्ट्स खत्म हो जाएंगे दिवाली के बाद। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब दिवाली में दीपक जलते हैं तो दैट इंसेक्ट्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट कैंडल, और उसमें वो अट्रैक्ट होते हैं, जाते हैं और फिर वो जल जाते हैं, फिर मर जाते हैं। ऐसा होता है, ठीक, जनरली। बट दैट एक्शन इज नॉट अ सोशल एक्शन। दैट एक्शन ऑफ दैट इंसेक्ट इज नॉट अ सोशल एक्शन। सोशल एक्शन कब कहलाएगा? आफ्टर नोइंग इट, इंटरप्रिटेटिंग इट एंड अंडरस्टैंडिंग इट। वो मीनिंगफुल रिस्पॉन्स होना चाहिए, तब वो होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर वही इंसेक्ट उस कैंडल लाइट के पास जाता है और ये समझ के जाता है कि ये कितना खूबसूरत लाइट है, मैं इसमें समाना चाहता हूं, मैं इसमें विलीन होना चाहता हूं, मैं इसकी तरफ अट्रैक्टेड होना चाहता हूं, देन इट शुड बी अ मीनिंगफुल रिस्पॉन्स। मीन्स द रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस आफ्टर नोइंग इट, अंडरस्टैंडिंग इट एंड इंटरप्रिटेटेड इट इन जनरलाइज्ड मैनर। So this is the definition of social action. Best example एक होता है कि अगर हस्बैंड और वाइफ एक रूम में है और एक कैंडल जलाएं, कैंडल नाइट डिनर, तो एक सोशल एक्शन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक मीनिंग जुड़ा हुआ है, ठीक। दैट शुड बी द डेफिनेशन ऑफ सोशल एक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस what should be the characteristics features of social actions. Social actions तो क्लियर हो गया, it's a behavior by which an individual responds to an external stimulus by knowing it, understanding it and interpreted it. Okay, now what should be the characteristics features? What should be the characteristics features? The first is meaningful response. मीनिंगफुल रिस्पॉन्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कभी पूछूं कि एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ रिलीजन, तो आप समझेंगे कि सर क्या पूछना चाहते हैं, एंड देन यू रिस्पॉन्ड टू मी दैट दीज आर द फंक्शंस ऑफ रिलीजन, दीज आर द थ्योरीज रिलेटेड टू फंक्शंस ऑफ रिलीजन। हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि डिफाइन और एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ रिलीजन और आप डरकाइम के बारे में बताने लगे, सुसाइड के बारे में बताने लगे, कुछ भी ऐसे नॉर्मली आप बोलने लगे, जो आपके मन में इच्छा हो रही है वही आप करते जा रहे हो, दैट इज नॉट अ सोशल एक्शन। सो इट शुड बी अ मीनिंगफुल रिस्पॉन्स। कुछ भी नहीं, मीनिंगफुल रिस्पॉन्स होना चाहिए, एंड दैट शुड बी द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सोशल एक्शन। Now, what should be the second important characteristics of social action is, it involves two individuals. It involves two individual. दो लोग का होना जरूरी होता है. If there will be a meaningful response, then it must involve two individual. Then it will become a meaningful response. The first is clear. What should the first character is meaningful response. The second is it involves two individual. Okay. The third important character is it is intended towards other. Intended. इंटेंडेड टुवर्ड्स अदर, मस्त मतलब किसी और के तरफ इंटेंडेड हो, झुकाव हो, तो वो सोशल एक्शन कहलाएगा. सो दीज आर द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ सोशल एक्शन. इट इन्वॉल्व टू इंडिविजुअल्स विद अ मीनिंगफुल रिस्पॉन्स एंड देन इंटेंडेड टुवर्ड्स अदर. सो ऐसे तो डेफिनेशन में मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स बहुत हो सकते हैं, लेकिन वी नीड टू फोकस ऑन दीज थ्री मेजर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स. एंड after that introduction is over, then characteristics features are over, then we are going to discuss the types of social actions. तो वेबर बोलते हैं कि in this entire world, पूरे इस दुनिया में चार तरीके के सोशल सेक्शंस होते हैं. there are four types of mainly social actions which are performed by an individual. और कोई भी सोशल एक्शन इन्हीं चारों का कॉम्बिनेशन होता है, सिंगल होता है या कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एक्शंस होते हैं पूरे इंटायर वर्ल्ड में. इन चारों एक्शंस को छोड़कर बाकी कोई एक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है.
So there are only 4 type of social actions which an individual respond to an external stimulus. Okay, so these are the characteristics features. यहाँ ये clear हुआ. Max Weber, his contribution, then social action, structural format, then it's a meaningful response to an external stimulus. This should be the characteristics features of social action. Now we are going to study the types of social action. The types of social action. He basically gave 4 types of social action जिन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे. और पूरे वर्ल्ड में ये 4 तरीके के ही एक्शंस होते हैं जो ह्यूमन पर्सन परफॉर्म करते हैं. द फर्स्ट इज ज़रूरत रैशनल एक्शन. ज़रूरत रैशनल एक्शन. This is also known as goal-oriented rational action. Goal-oriented rational action. Goal-oriented rational action. अब इसका मतलब क्या होता है कि this action is just for a particular goal. Best example, to become an IAS officer, you are preparing for civil services exam. योर गोल इज फिक्स्ड कि मुझे IAS निकालना है. उसके लिए आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हो और जो फंक्शंस आप परफॉर्म करते हो दैट फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ योर रैशनल एक्शन. बेस्ट एग्जांपल, टू बिकम एन IAS ऑफिसर मींस गोल ओरिएंटेड रैशनल एक्शन, IAS. बेस्ट एग्जांपल. ठीक. सो दिस वन इज द फर्स्ट टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन, योर रैशनल एक्शन. Okay, now we are going to discuss the second type. That type is known as word rational action. Word rational action. This is also very important. Or this rational action is known as value oriented rational action. Value oriented rational action. This is very important. Value oriented oriented rational action. What rational action को बोलते हैं? Value. पहला क्या होता है? That is goal oriented. This is value oriented. अब एग्जांपल से आप समझेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा. फॉर एग्जांपल कि if there is a captain in a ship और वो शिप डूबने लगता है किसी वजह से, टेक्निकल फॉल्ट से, तो वो कैप्टन एक्सेप्ट कर लेता है बिकॉज ऑफ माई फॉल्ट ये शिप डूब रहा है, तो मैं डिसाइड करता हूं कि इस शिप के साथ मैं भी डूबना चाहता हूं. द सिंकिंग शिप कैप्टन. अब बेस्ट एग्जांपल आपको याद होगा, टाइटैनिक मूवी आपने जब भी देखा होगा तो उसमें ये होता है कि वो लोग आके बोलते हैं कैप्टन से, उस पायलट से शिप के, कि सर आप दूसरी बोट पकड़ के निकल जाओ, अब ये शिप डूबने वाली है. तो बोलता है नो, ये मैं इसका लीडर हूं और शिप डूब रही है, मैं इसके साथ ही डूब जाऊंगा. That is also a social action, meaningful response to an external stimulus, but that rational action fall into the category of what rational action means, value oriented rational action. Value oriented, goal oriented नहीं है, value oriented है, values laden है. For example, LTT bombers, Tamilians, LTT bombers in Sri Lanka, वो इतने वैल्यू ओरिएंटेड है कि वो मतलब अपने आप को ही मार लेते हैं, उन्हें कोई चीज मतलब नहीं है. सुसाइड बॉम्बर्स हैं, ब्लास्ट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है. देयर एक्शन फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ वैल्यू ओरिएंटेड रैशनल एक्शन मींस व्हाट रैशनल एक्शन. एग्जांपल, LTT सुसाइड bombers. The first one is goal oriented, this is value oriented. The third most important rational action, which is very important, is effective action. Effective action. Now what should be the effective action? Those actions which are guided by our emotions. Guided by emotions. Guided by emotions. Effective actions, those social actions which are guided by our emotions. Best example, for example, mother slapping his child.
हर चाइल्ड। अगर माँ है अपने बच्चे को मारती है, दैट सोशल एक्शन इज मच मोर मोटिवेटेड बाई इमोशंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप छत पे पेड़ पर चढ़े और पेड़ पर से एक बार गिर गए, और गिर गए, आपको बहुत बुरी तरीके से चोट लगा हुआ, आप घर पे आए और आपकी मदर देखी और उसके बाद आपको 10 झापड़ और मार रही हैं, गुस्से में और मार रही हैं। वो बस ये बोल रही हैं कि जब तुमको मैंने मना किया है कि पेड़ पे नहीं चढ़ो, गिर जाओगे, तो फिर क्यों गए? एक तो ऐसे ही चोट लगा है, पेड़ से गिरे हो, तो उसके बाद घर पे गए और मदर भी आपको पीटे जा रही हैं। दैट एक्शन, दैट मदर एक्शन इज गाइडेड बाई इमोशंस। सेम इन यूपीएससी। प्रिपरेशन करने आए, एक साल बाद रियलाइज हुआ कि सिलेबस इज वेरी टफ और एग्जाम इज वेरी टफ, आई एम नॉट एबल टू क्वालिफाई दिस एग्जाम, बट स्टिल आई वांट टू प्रिपेयर फॉर मोर देन 2 or 3 or 4 year, guided by emotions. And always remember one thing, those decisions which are taken in emotions are always wrong. ठीक, हमेशा गोल ओरिएंटेड रैशनल एक्शन होना चाहिए। गोल फिक्स कर लो अपना, नॉट बाय इमोशंस, नॉट बाय वैल्यूज। गोल ओरिएंटेड रैशनल एक्शन होना चाहिए। सो इफेक्टिव एक्शन, दोज एक्शंस व्हिच आर गाइडेड बाय आवर इमोशंस। बेस्ट एग्जांपल, मदर स्लैपिंग हर चाइल्ड। नाउ व्हाट शुड बी द लास्ट सोशल एक्शन? That is known as traditional action. Fourth, traditional action. अब ये क्या है? Those actions which are guided by imitations of ancestors. Those actions which are guided by imitations of ancestors. अब बेस्ट एग्जांपल हमको आपको बताया जा रहा है। टचिंग फीट ऑफ एल्डर इन इंडियन सोसाइटी। वो एक्शन, वो कोई भी एक्शन हो, which are the imitations of ancestors. हमारे ancestor ऐसा करते थे, इसलिए हम भी वो एक्शन कर रहे हैं, हम भी वो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में क्या होता है, जो भी बड़े लोग होते हैं उनका हम पैर टच करते हैं, ठीक? तो हम ये क्वेश्चन नहीं करते हैं अपने फादर से कि आप अपने फादर का पैर क्यों टच करते हो। मैं भी घर पे जाऊंगा तो अपने फादर का पैर टच करता हूँ, मदर का पैर टच करता हूँ, मेरे बच्चे होंगे वो मेरा पैर टच करेंगे। तो इमिटेशंस ऑफ एंसेस्टर, हमारे एंसेस्टर ऐसा करते थे इसलिए हम भी वो कर रहे हैं। So that fall into the category of traditional action, imitations because of those actions which are guided by imitations of the ancestors. इसका बेस्ट एग्जांपल है कि किसी फैमिली में देखा जाता है कि मंगलवार को सारे लोग फास्ट रहते हैं, तो आप कितना भी खाओ उस दिन आपके घर में खाना नहीं बनेगा, एंड फोर्सफुली आपको बोला जा रहा है कि आप फास्ट रहो। So that social action is guided by traditional action. So these are the 4 type of social actions which are given by वेबर। वो ये बोलते हैं कि पूरी दुनिया में यही 4 तरीके के एक्शंस होते हैं जो ह्यूमन रिस्पॉन्स देते हैं इसी एक्शंस में, और इन्हीं के कॉम्बिनेशंस में होते हैं, बाकी कोई एक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक? सो इंट्रोडक्शन इज ओवर, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ सोशल एक्शंस आर ओवर, टाइप्स ऑफ सोशल एक्शंस आर ओवर। नाउ वी आर गोइंग टू कंक्लूड विद आवर criticism. What should be the criticism? This is also very important. So the first criticism by Parson. Criticism. The first given by Parson. What he says that social action, Weber क्या बोलते हैं कि in this social action 2 individuals are required. He said that there is no need of 2 individuals. Social actions can be performed singularly. अकेले भी इस एक्शन को परफॉर्म किया जा सकता है, और अकेले भी जो परफॉर्म हम अपना एक्शन करते हैं, that action is also a type of social action. This should be the first criticism, that social actions can be performed singularly. ठीक? This is the statement given by Parson. Now, what should be the second important criticism given by A. Cohen? A. Cohen. Second important criticism. He said that there are certain freak action
which also fall into the category of social actions are not discussed by Weber. Weber चार तरीके के social action बोलते हैं, लेकिन ये बोलते हैं कि there are also certain type of freak actions which are also into the category of social action, जिनके बारे में Weber कभी डिस्कस करते ही नहीं है, ना ही किया है. और freak action क्या होता है? एक पागलपंती समझ लो, जैसे पागल लोग को कभी देखते हो, अब ये फोन पे झूठ मूठ का बात करेगा, हंसेगा, खूब जोर जोर से हंसेगा, अचानक रोने लगेगा, समझ में नहीं आएगा ये क्या कर क्या रहा है, फिर एकदम सीरियस हो जाएगा, फिर अचानक खाना खाने लगेगा, कुछ भी. फ्रीक एक्शन मतलब एकदम मैडनेस वाला एक्शन जो होता है. सो फ्रीक एक्शन cannot मतलब are not, these type of actions are not discussed by Weber, which also fall into the category of social action. So these are the things which are related to social actions. So in this manner we need to cover each and every topic in that manner. Every topic अगर ऐसे आपका कवर है, जरूरी नहीं है कि मुझे 20-20 क्रिटिसिज्म इनके पता होने चाहिए. एग्जाम में लिखने के लिए टाइम भी होना चाहिए, स्पेस भी होना चाहिए, दोनों ही नहीं है आपके पास, और उससे पहले रटा होना चाहिए, वही नहीं है. तो 40 में यहाँ क्रिटिसिज्म बता दो, उसका कोई मतलब नहीं है. कम पढ़ो बट इन एन इफेक्टिव मैनर. So Max Weber, his contribution in the field of sociology, social action, ideal types, authority and bureaucracy, then Protestant ethics and spirit of capitalism. In this lecture, we start with our social action with intro, body and conclusions. This should be the structural format. In body, characteristic features, then types, in conclusion, criticism. Okay. Now, a meaningful response to an external object after knowing after knowing interpretation and discussing it is known as social action. Now he said that there are three characteristics of social action. The first is meaningful response, the second is involvement of two individuals, the third is intended towards other. Now we are going to discuss what should be the types of social action. So 4 types. The first is work rational action, that is also known as those rational action that is oriented by goal, or goal oriented rational action is known as work rational action. The second is what rational action, means value oriented rational action, those actions which are guided by our values. The third, affective actions, are those which are guided by our emotions. And the last one is traditional, means those actions which are guided by the imitations of our ancestor. And at last, criticism given by Parson, means social action can be performed singularly. And then A. Cohen, he said that freak action is also a type of social action, and that type of action is not discussed by Weber. So these are the things which are related to social action of Weber. अब इतने ऐसे क्रोनोलॉजी में और इतना सिंप्लिसिटी के साथ इजी लैंग्वेज में आपको ये चीज कहीं नहीं मिलेगा. तो पहले इसे पढ़ो, दिमाग में बैठा लो, डेफिनेटली इसके बाद आप बिल्डअप कर सकते हो. दिस शुड बी योर बेस. और इतना बहुत है, एग्जाम में जनरली 10 मार्कर में पूछा जाएगा और आप बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हो. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक ऑफ वेबर इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू सो मच.